Hello, Namaskar. Today we are going to look at a concept in economics which is important whether you are doing your HSC examination preparation or you are doing CA foundation. आप जो भी कर रहे हो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा. शायद आप इस कॉन्सेप्ट का नाम भी जानते हो. इस कॉन्सेप्ट का नाम है, शॉर्ट में पहले लिखता हूँ, GDP. दैट इज in the long form gross domestic product. नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है. अब ये कॉन्सेप्ट वैसे तो इसके ऊपर काफी चर्चा हो सकती है, बट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रैप इट ब्रीफली राइट नाउ. If I define GDP, there is a very commonly known definition all around which says that GDP is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a nation in a given period of time, normally 1 year. ऐसा इसका डेफिनेशन आता है. अब इस डेफिनेशन में पहले सुनने पर आपको लगेगा अरे बाप रे ये क्या क्या है इसमें. नहीं, three important things only. If I highlight those 3 things within 5 minutes, you will be able to capture the entire idea. First, what is important is that we are talking about money value. So when we look at, just a moment, when we look at money value, let's understand that money value means we are not going to talk about these goods and services in terms of quintals, tons, liters, etc. जितना भी उत्पाद देश में होता है वो सब आपको ऐड करना है. So some goods are measured in tons, some in liters, services are measured in minutes, hours. So obviously you cannot add it up. अरे एक सिंपल सा काम करो ना, you turn all those goods and services into their money value. That means in India we will speak about it in rupees terms. That is money value. So instead of saying 100 liters of milk, instead of saying that, if you said 15,000 rupees worth of milk, तो हो गया ना काम. Same, you are talking about the same output. Suppose it's rice. Instead of saying इतने इतने किलोग्राम का राइस, आप कहो ना कि ये 10,000 रुपए का राइस है. सो यू हैव टर्न्ड इट इनटू मनी वैल्यू. सो फर्स्ट वी विल टेक मनी वैल्यू. सेकेंडली, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज वेयर देयर जर्नी इज ओवर. जर्नी इज ओवर, दैट मीन्स अब ये जो गुड्स सर्विसेज है उनको और गुड्स एंड सर्विसेज में तब्दील नहीं किया जाएगा. These are goods and services that are going to be consumed and their journey as a product is over. It could be sometimes a car, a fan, a mobile phone, a laptop. For example, it could be just a glass of water, you know. So those are the goods and services we are going to talk about. इनकी वैल्यू ऐड करनी है, देश में कितनी होती है. अब ऐड करते वक्त एक जरूरी बात, पहले मैंने कहा जरूरी बात क्या थी, that they are money values. Secondly, only of final goods and services. And now we have also said in the definition that this should be money value within the domestic territory of the nation. तो देखना पड़ेगा कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है. डोमेस्टिक टेरिटरी, द टर्म हैज बीन डिफाइंड इंटरनेशनली. देयर इज अ कन्वेंशन अबाउट इट. मतलब एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है अलग अलग देशों के बीच में. So wherever you go, whether you are in US, UK, India, Japan, wherever you go, the term domestic territory is going to have exactly the same notion, the same idea for everyone. So domestic territory का मतलब होता है all those territories, whether it is land, water, air, whatever it might be, all of that which comes directly under the authority of the government of that nation is going to be termed as domestic territory. चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में. बहुत सारी चीजें आती है रे, उसमें से कुछ देखते हैं. चलो, सो व्हाट कैन कम अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी. नंबर 1, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, द बॉर्डर. बॉर्डर मतलब जेपी दत्ता साहब की फिल्म? अरे नहीं, बॉर्डर का मतलब हुआ द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन. We are talking about the land mass here. वो पूरा का पूरा भारत देश का मैप देखते हो ना, स्कूल से देखते आ रहे हो, वो पूरा मैप आता है इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में. सो डोमेस्टिक टेरिटरी वुड इंक्लूड द बॉर्डर्स. फर्दर it would include all the air space,
So according to international convention, international agreement, it is already decided that above your territory, land territory, so much of airspace belongs to that nation. वो domestic territory के अंदर आ गई. If the land is taken, the airspace is taken, then the waters also need to be included. So waters matlab territorial waters. India has got waters on 3 sides of the nation. Arabian Sea, Indian Ocean, Bay of Bengal, तीनों साइड से एक पर्टिकुलर नॉटिकल माइल्स होते हैं जो हमारे होते हैं. यू माइट अंडरस्टैंड दिस इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे. इंडियन नेवी, the amount of water that Indian Navy is supposed to protect around us, that's exactly our territorial waters. ये सब आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. डोमेस्टिक टेरिटरी विल इंक्लूड embassies. Embassies are offices abroad in other nations. अब embassies आ गई तो consulates भी आती है. consulates भी हमारा ही एक ऑफिस होता है बाहर के देश में. So all the embassies, all the consulates are included, and then oil rigs are included, and ships and aircrafts and submarines, or I can say etc etc. ऐसी बहुत सारी चीजें इस डोमेस्टिक टेरिटरी टर्म के अंदर आती है. And it is reciprocal. For example, if India's embassy in US, where our ambassador will sit and work and his office will function, if that embassy, Indian embassy in US, belongs to our domestic territory, तो ठीक उसी प्रकार US embassy in India belongs to their domestic territory. इसको कहा जाता है reciprocal. So it is all reciprocal and it all fits like a jigsaw puzzle. You get it? So several things, like I said, if a ship or an aircraft belongs to Indian entity, it may be owned by an individual, a family, organization, does not matter. If it belongs to it, if it is owned by an Indian, it is part of our domestic territory. Hot air balloon ho या submarine ho, जो भी है, even when it is going through other nations' domestic territory, at that moment also it belongs to our domestic territory. मतलब एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट अगर हीथ्रो पे लैंड हो रहा है, आप कहोगे हीथ्रो क्या होता है? अरे हीथ्रो द एयरपोर्ट इन इंग्लैंड, लंदन. तो लंदन एयरपोर्ट पे एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा है उधर. इवन एट दैट टाइम इट इज पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी. इट बिलोंग्स टू एन इंडियन कंपनी owned by Indians, operated by Indians, so it's part of our domestic territory. ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है. And now when we look at GDP, what we are saying is it is the money value of all the final goods and services which are produced within this domestic territory. इस domestic territory के अंदर जितनी भी goods services पैदा हुई, प्रोड्यूस हुई, उनकी वैल्यू ली जाएगी, ताकि हमें एक आइडिया आए कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में कुल मिलाकर कितना उत्पाद हुआ था उस साल में. ये पूरा क्लियर आइडिया होना चाहिए. एंड व्हेन यू डू दैट, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वेरी कॉमनली द शॉर्ट फॉर्म इज यूज्ड जीडीपी. वैसे तो नेशनल इनकम के ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये भी कॉन्सेप्ट ना भैया बहुत 1-1.5 घंटे के लिए इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, अभी नहीं. दैट विल डू इन अनदर लेक्चर. But this gives you a brief idea of what exactly is the concept of GDP. May I repeat one part of the lecture, that it is important, this concept is important for your CA foundation syllabus as well as your HSC syllabus. ऐसा concept है ये. So I think that's where we will conclude for today. Thank you and see you soon.